Hello students. So today we are going to start with the most important topic from physics section 2 for MHTCET, and the lesson is electromagnetic induction, E.M.I. Now this lesson for board exam, it was for 6 marks with option. So in CET exam we can expect 2 to 3 numericals or 2 to 3 MCQs on this particular topic. So this is very important, CET point of view से very important topic है ये. And let us start with the discussion of E.M.I, electromagnetic induction. Now before we start with the topic directly, first of all you must understand the meaning of word electromagnetic induction. What exactly the word electromagnetic induction means. Now see, to understand the meaning of E.M.I, first I will take you back to 10th standard basics. Do you remember what is heating effects of electric current? Heating effect of electric current. If you remember this concept, heating effect of electric current, उसमें if you pass a current through resistor R, then this resistor liberates, it dissipates heat, correct? And the formula for heat was, if you remember, it was I square RT. तीन वर्जन थे उसके, VIT, V square upon RT and I square RT. This is heat emitted or heat liberated by a resistor when current passes through it, correct? This was called as heating effect of electric current. Then 11th standard में आने के बाद we have also studied one more effect of current, that was magnetic effect of electric current, correct? Magnetic effect of electric current. और magnetic effect में क्या था? If you pass current through a conductor, it generates magnetic field in the surrounding medium. उसके surrounding medium में magnetic field is generated. अब ये दोनों effects थोड़ा ध्यान से देखो. Heating effect में what is input and what is output? Tell me. Input क्या है? What do we give and what do we get? Heating effect में we give current, we give electric current, and what is the output that we get? Output में we get heat, heat मिलता है output में. वैसे ही magnetic effect of electric current में what is input and what is output? Tell me. Input में we give current, we pass current. When you pass current we get field automatically. कौन सी field? We get magnetic field, correct? So heating effect and magnetic effect already we have studied in 10th standard and 11th standard. ये 12th में भी था magnetic effect. So we already know this. लेकिन ये जो effect है heating effect या फिर magnetic effect, exactly the reverse effect of these effects. Reverse effect मतलब क्या? इनके रिवर्स इफेक्ट कैसे होंगे? देखो, हीटिंग इफेक्ट का जो रिवर्स इफेक्ट होगा उसमें इनपुट क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा हीट, करेक्ट? वी विल हीट दैट कंडक्टर. सो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में वी विल गेट करंट. ये इसका रिवर्स इफेक्ट हो गया, करेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा कि अगर कंडक्टर को हीट किया तो इट विल, द करंट विल फ्लो थ्रू दैट विल बी द रिवर्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग, रिवर्स इफेक्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, करेक्ट? सो दैट रिवर्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Now this thermoelectric effect we don't have in our syllabus. State board के syllabus में ये नहीं है. It was in the previous syllabus 2012 के पहले जो syllabus था उसमें ये concept था thermoelectricity. In that what we do, I'll just give you one idea. उसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग metals के wire we take and दोनों के junction को, एक junction को heat करते हैं, दूसरे junction को उसको temperature कम करते हैं. So temperature difference generates the heat, the temperature difference generates the electricity. So heating effect का reverse effect जो है that is thermoelectricity, thermoelectric effect. So heating effect में input current output heat, उसके reverse effect में input heat output current. वैसे ही exactly similarly इसका भी एक reverse effect होगा, इसका भी एक reverse effect होगा, right? Can you tell me उसमें input क्या होगा and can you tell me उसमें output क्या होगा? Correct. The input in the reverse effect of magnetic effect will be, input will be magnetic field and output what you will get current as the output. This reverse effect of magnetic field and output as current is called as electromagnetic induction. This reverse effect of magnetic effect of electric current is called as electromagnetic induction. Electromagnetic induction, when we will go into electromagnetic induction lesson का detail, then we will see कि ये जो input magnetic field that we are going to give, that should be a varying, changing magnetic field. वो detail में जाएंगे तब you will understand what is the meaning. Okay, so now we know that, now one term that electromagnetic induction का meaning whenever anyone will ask you कि EMI मतलब क्या, तो EMI का मीनिंग क्या है? यह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवर्स इफेक्ट. जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवर्स इफेक्ट थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवर्स इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में व्हाट इज द इनपुट, वी विल गिव मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द आउटपुट, वी विल गेट द करंट. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड देनी है. सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो द वर्ड और द फर्स्ट टर्म इन दिस टॉपिक दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड और यू मस्ट नो is magnetic flux. The notation is phi. So let us start discussion of the lesson. We will start the lesson now. The first term in the lesson is magnetic flux. Okay, so the first important word or the first important term in electromagnetic induction is the magnetic flux, because that is the basis of this lesson, because we are going to give magnetic field, right? So magnetic field hai ye, north pole to south pole magnetic field is going, lines goes from north to south outside the magnet. और ये magnetic field में एक blue color का जो area है, a small area is placed. वो जो area है वो magnetic field को inclined है, it is inclined, correct? So उसका जो area vector है, what is area vector? Area vector is a vector which is perpendicular to the area. वो area vector is shown in this direction. It is shown in this direction, which is making angle theta. It is making angle theta with the direction. So when this angle will be zero, tell me, अगर ये एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होता फील्ड को तो एंगल जीरो हो जाएगा. एंड व्हेन दिस एंगल मेड विथ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90. 90 कब होगा वो? अगर एरिया हॉरिजॉन्टल होगा. अगर एरिया फील्ड को हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वेक्टर 90 डिग्री पे होगा. और अगर एरिया खुद फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, इन दैट केस द एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू द फील्ड. सो if this is area which is inclined, remember angle is always measured between the normal to the area, that is area vector, and the field. Never measure angle between the area itself with the field. Most of the student will make this mistake कि area perpendicular है, so they will take angle 90. No, angle is 0. Why angle is 0? Because area vector is parallel to the field. Field के direction में area vector parallel है. So if angle made by area vector with the field is phi, then the flux that is passing through this, how many lines of magnetic lines of forces are passing normally, is given by b dA cos theta, b bar dot dA bar dot product, that is b dA cos theta. And if this coil has got n number of turns, अगर इसको n number of turns है, in that case you need to multiply by n. So this is the formula for flux passing through a coil. Now just to understand this concept in more detail, I will take one or two questions. Let us say first question ऐसे है, this is y axis and this is x axis, and magnetic field is in this direction in xy plane. xy plane में magnetic field है, right? xy plane में magnetic field है, कितने एंगल पे दिया? यहाँ पे 45 डिग्री पे फील्ड दी है. It is in the plane of xy. Now in this plane, in the same plane, if I place a coil, suppose if I place a circular coil जिसका एरिया है A, ये फील्ड है B, then tell me what is the flux passing through this blue color का coil? What is the flux passing through this coil which is placed in the field? Now if you apply this formula, the correct answer, if you understand this particular concept, then you will get the answer. The correct answer should be 0. Correct answer will be 0. Most of the student will get the answer as B A cos 45. Remember this angle is completely useless because ये angle नहीं है theta. What is theta? Theta is the angle between area vector and magnetic field. अभी देखो magnetic field कौन से plane में है? Magnetic field xy plane में है. उसी प्लेन में एरिया है, उसी प्लेन में एरिया है. सो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर से बाहर है, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. सो द एंगल बिटवीन magnetic field and area vector is 90 and cos 90 is 0. Not even a single line is passing through this coil, so the flux is 0. Okay, so very important concept this is. Number of the flux through any coil can be calculated by this formula, where theta is angle between b bar and da bar. Very important, you must know b bar and area vector के बीच का एंगल होता है theta. So this is how we can calculate flux passing through any given coil. Any coil में से you can find the flux. Okay, example number 2. See example number 2. Suppose if this is magnetic field, or I'll take magnetic field in the plane in this way, cross, magnetic field is cross. Okay, magnetic field, let us take value as well, 10 Tesla. Unit of magnetic field, you must know it is Tesla.
Weber per meter square or Tesla. Now suppose in this particular magnetic field, if I place a coil जिसका एरिया है 20 meter square. 20 meter square. Now how much flux is passing through this area? Green color के area में से how much flux is passing? So for that you must use this formula. Number of turns एक ही लिया है, एक ही coil है. B is 10, area is 20 into what is the angle between area vector and magnetic field? Tell me. अभी area is in this way. This is the area, correct? ऐसे रखा है area. So area vector will be normal inside या फिर outside होगा, inside या फिर outside. Okay? Area vector is inside. Let us take अंदर है, अंदर की direction में. And magnetic field is also inside. So if magnetic field is inside, area vector is inside, the angle between them will be 0 and cos 0 is 1. So answer is 200 Weber. कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से? 200 Weber. This is the flux. Now if I rotate this coil, इस coil को rotate किया, ऐसे rotate किया. Okay, if I rotate this coil in this way और उसको ऐसे कर दिया, if I place the coil in this way now, मतलब magnetic field lines are going in and coil is placed in this way. What do you think? Flux will obviously become 0 now because अभी magnetic field और area vector में angle कितना है? Angle is 90 degree. Even though area parallel हो गया field को, but area vector हो गया perpendicular, so no flux will pass. This is how you will solve the questions related to magnetic flux. This is very basic. This is very basic for understanding electromagnetic induction का आगे का part, that how to calculate flux passing through a coil, how to find flux passing through given area, and the formula that will help you is B bar dot dA bar, that is BdA cos theta, n number of turns के लिए nBA cos theta. So now let us move to the next important part, that is the laws of E.M.I, laws of electromagnetic induction. Okay, so now we have seen that what is the meaning of E.M.I. We are going to start with the laws of electromagnetic induction. We know that electromagnetic induction means it is the reverse effect of magnetic effects, right? Means input will be magnetic field, we will give magnetic field, we will get current as the output. Current मिलने वाला है, current we will get as the output. So to explain this, there were 3 laws given. 2 laws are called as Faraday's laws and the last one is called as Lenz law. What exactly these laws are? See, the first law will tell you when you will get current. First law will tell you when you will get current. Second law will tell you how much you will get current. How much current you will get. Second law will tell you how much. First will tell you when current कब generate होता है. Second will tell you how much कितना current generate होता है. Current या फिर EMF, you can consider current and EMF as one same thing, right? Because current, Ohm's law use किया तो V equals to IR. So how much current, when current will be produced? Second law will tell you how much current will be produced, and third law, that is Lenz law, will tell you in which direction the current will produce. These are 3 important fundamental laws of this lesson, electromagnetic induction, right? So first law is when when the current is developed. Second law will tell you how much it is developed, and third law will tell you in which direction. Now just pay attention. When the current is developed, let us consider this is magnetic field, okay? और इस magnetic field में if I place a coil, this is a coil placed in magnetic field. ये जो magnetic field है उसकी वैल्यू B की वैल्यू है, let us consider 5 टेस्ला, एंड ये जो एरिया है, एरिया की वैल्यू जो है it is 2 meter square. So can you tell me what is the flux right now? इसमें से कितना flux पास हो रहा है अभी? For time being, how much flux is passing through it? The flux का formula is N number of turns, B magnetic field, area into cos theta. And since we know that number of turns is 1, B is 5 and this is 10, 2, that will become 10. 1 into 5 into 2, 1 into 5 into 2 will give you 10. 1 into 5 into 2 will give you 10. But what is angle? The angle between magnetic field, which is inside, and circular coil का area vector भी inside है. Okay, area vector is also inside. So उनमें angle जो है it is 0 degree. So cos 0 is 1. So right now कितना flux pass हो रहा है? Flux passing is 10 Weber. Right now 10 Weber flux pass हो रहा है. First law tells us when EMF is developed, and the statement is whenever there is change in the flux in the coil. इस coil का अगर flux change हुआ
Right now 10 is passing. If it becomes 11, 12, 13, 14, तो current will flow. If it becomes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब decrease हुआ या फिर increase हुआ, तो current is going to flow in this wire. इस वायर में करंट तभी फ्लो होगा whenever there is change in flux in the wire. Correct? Change in flux होना चाहिए. Now can you tell me what are all different ways by which I can change the flux? First obvious way है कि I can change I can change B, magnetic field. If I change magnetic field, मतलब 5 टेस्ला है ना, I will change the main जो magnetic field है ना, उसका थोड़ा strength बढ़ाता हूँ, I'll make it 6 टेस्ला. Automatically flux will become 12. So इसमें से current flow होना चालू होगा. If I make it 7, current will keep on flowing. 8 और increase करते गया, current will flow. Because whenever there is change in flux, what is the first law? First law tells us whenever there is change in magnetic flux through the coil, current will flow or EMF is induced. The correct statement is EMF is induced. Current will flow or not, that is different story. EMF is induced and because of EMF obviously current flows if the circuit is complete. But we will see in some cases कि अगर सिर्फ रॉड है, ये अगर कॉइल नहीं सिर्फ रॉड है और रॉड में only current will not flow, rod में current cannot flow, only EMF is induced in such cases. But for time being right now we are in the very basic stage of E.M.I. So what you must understand is what are 3 laws of E.M.I. First law will tell you EMF या फिर करंट कब फ्लो होता है, सेकेंड लॉ विल टेल यू हाउ मच करंट फ्लो होता है और थर्ड विल टेल यू इन विच डायरेक्शन करंट फ्लो होता है. सो फर्स्ट लॉ वेदर इट इज क्लियर, वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स. अब फ्लक्स चेंज करने के डिफरेंट मेथड्स बताए. फर्स्ट मेथड इज बाय चेंजिंग बी विल चेंज फ्लक्स. सेकेंड मेथड क्या है, ऑब्वियस सेकेंड मेथड है चेंजिंग एरिया चेंज करो, मतलब ये कॉइल को छोटा कर दो या बड़ा करो और छोटा करो और बड़ा करो, चेंज एरिया, ऑटोमेटिकली फ्लक्स विल चेंज. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज एंगल थीटा चेंज करो. अब थीटा कैसे चेंज करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इनसाइड. करेक्ट, एरिया वेक्टर इज इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, बोथ आर इनसाइड. सो अभी एंगल 0 है. इफ आई रोटेट द कॉइल इन दिस वे, करेक्ट, ऐसे रोटेट किया कॉइल को, ऑब्वियसली एंगल इज चेंजिंग. अभी एंगल 0 है, एंगल इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60. ऐसे कर दिया कॉइल को तो 90 डिग्री हो गया, और ऐसे किया इट विल इंक्रीज, ऐसे हो गया 180 हो गया. सो एज यू रोटेट द कॉइल, इफ यू रोटेट दिस कॉइल अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया अगर कॉइल को, this coil, if I rotate about this vertical axis, you will find the area angle is going to change, flux is going to change. If I rotate it about this axis, ऐसे रोटेट किया तो भी फ्लक्स चेंज होने वाला है. करेक्ट, बट इफ आई रोटेट द कॉइल इन दिस वे, ये जो कॉइल है ना इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे, इफ आई रोटेट इट इन दिस वे, ऐसे अभी कॉइल है, ऐसे रोटेट किया, एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज. करेक्ट, बिकॉज डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अभी तक area vector. So changing angle, changing area, changing B, these are 3 ways by which flux can be changed. Yes, changing N will also work, but mostly out of these 3, any one thing is changed and flux is changed. And once flux is changed, automatically EMF is induced, and as EMF is induced, current is also induced. So whether first law is clear, this is called as first law of electromagnetic induction, called as Faraday's first law. Okay, Faraday's first law. This is Faraday's first law, which will tell you when electromagnetic induction, when electric current is induced or when EMF is induced. Second law, Faraday's second law. क्या है उसका मेन एम, हाउ मच, ठीक है करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन हाउ मच करंट इज गोइंग टू फ्लो. द आंसर इज द अमाउंट ऑफ करंट और the magnitude of EMF induced. EMF जो इंड्यूस होने वाला है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करने वाला है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, सी मीनिंग इज वेरी सिंपल. राइट नाउ कितना फ्लक्स है, फ्लक्स इज 10. करेक्ट, इसमें से 10 फ्लक्स इज पासिंग. राइट, इफ आई स्टार्ट चेंजिंग B, 6, 7, 8, 9, I start changing this. So this will change, this will become 12 Weber. Okay, for example, अगर मैंने 5 to 6 कर दिया उसको, 5 to 6, तो flux will also change, 10 से 12 हो जाएगा.
Now if I change 5 to 6 in very fast time, in very quick succession, मतलब अगर फास्ट चेंज किया, रेट ज़्यादा रेट से चेंज किया तो फ्लक्स भी ज़्यादा रेट से चेंज होगा. 10 will become 12, 12 will become 14. Quickly d5 by dt will be more, and as d5 by dt will be more, obviously more EMF will be developed. Okay, I'll give you another example to understand that second how much EMF is going to develop. See, second law जो है, I'll give you one more example of it. Let us consider this is magnetic field, cross मतलब inside है, and magnetic field का strength is 10 Tesla. Okay, and right now there is a coil inside, इसका area है 2 meter square. So can you tell me flux कितना है? Flux is 20 Weber. Correct? Now if I take this coil and if I pull it out, उसको बाहर ले लिया, तो बाहर लेने के बाद इनडायरेक्टली मैंने B जीरो कर दिया, राइट ना, यहाँ पे B जीरो है ना. सो अभी कितना फ्लक्स है? फ्लक्स इनिशियल 20 है, फ्लक्स फाइनल 0 वेबर है. सो कितना चेंज हुआ फ्लक्स में? फ्लक्स में चेंज हुआ 20 वेबर का. करेक्ट. इन केस नंबर वन में आई विल टेक दिस कॉइल आउट वेरी 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 स्लोली. इसको यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड्स यूज किया मैंने. आई हैव यूज्ड 10 सेकेंड्स. सो कितने टाइम में फ्लक्स चेंज 20 हुआ? करेक्ट. 20 to 0 मतलब फ्लक्स चेंज 20 हुआ. कितने टाइम में हुआ? dt कितना है? 10 सेकेंड्स है, मतलब आंसर आया 2. सो इसमें 2 वोल्ट का EMF डेवलप होता है. 2 वोल्ट का EMF विल बी डेवलप. बट इफ द सेम थिंग 20 यहां से यहां तक, इफ आई पुल द कॉइल वेरी क्विकली, सेकेंड केस में, केस 2 देखो अभी, यहां से यहां इफ आई पुल इट वेरी क्विकली, 10 सेकेंड नहीं, नाउ आई विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड में वेरी क्विकली इफ आई पुल इट, देन व्हाट विल बी d5 by dt. अगेन d5 विल रिमेन सेम. 20 वेबर अभी है, फाइनली 0 वेबर है. सो चेंज तो 20 ही है, लेकिन टाइम कितना लिया मैंने? टाइम सिर्फ 2 सेकेंड लिया है. 2 सेकेंड. सो आंसर इज 10 वोल्ट. करेक्ट. इनिशियली 2 वोल्ट डेवलप हुआ था जब स्लोली पुल किया, लेकिन फास्ट क्विकली पुल किया तो यू विल गेट मोर वोल्टेज. सो EMF जितना डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d5 by dt. एंड वी आर फॉर्चुनेट कि इसका जो कांस्टेंट है वो यूनिटी है, 1 है उसका कांस्टेंट. सो स्ट्रेट अवे वॉट एवर वी गेट d5 by dt का आंसर इटसेल्फ इट इज इन वोल्ट. सो डायरेक्टली वोल्ट लिख सकते हैं इसको. सो द फर्स्ट लॉ विल टेल यू व्हेन EMF इज डेवलप्ड. EMF इज डेवलप्ड whenever there is change in flux. और फ्लक्स 3 मेथड से चेंज कर सकते हैं. B चेंज करके, एरिया चेंज करके, एंगल चेंज करके. करेक्ट. देन सेकेंड लॉ टेल्स अस कि कितना डेवलप होता है. यस, करंट डेवलप होता है, फर्स्ट लॉ विल टेल यू. और EMF डेवलप होता है, फर्स्ट लॉ विल टेल यू. सेकेंड लॉ विल टेल यू कितना, हाउ मच. EMF डेवलप्ड कितना है, इट इज डिपेंडेंट कि कितने रेट से तुम चेंज करते हो फ्लक्स को. इफ यू आर चेंजिंग एट हायर रेट, मोर EMF इज डेवलप्ड. इफ यू आर changing at a smaller rate, low EMF is developed. So EMF developed is directly proportional to rate of change of flux. And the third and the last law, first law, इसको Faraday's first law बोलते हैं, इसको Faraday's second law बोलते हैं. This is called as Lenz law or Lenz's law. This third law will tell us कि in which direction, मतलब इस coil को जब बाहर pull किया तो इसमें current is going to flow और EMF is developed in this direction या फिर this direction. How to check? That is given by the third law, which is called as Lenz law. And now we will see the meaning of Lenz law. Okay, so now the next point is Lenz law. We have seen first 2 laws, Faraday's first law, Faraday's second law, and now the third one is Lenz law. What Lenz law tells us is in which direction the EMF or current is going to flow. The answer is, the law says that current will flow in such direction that it will always oppose the change in flux. It will not allow flux to change. Now see, if you want to understand this law, mostly question इस पे बनते हैं, direction of current calculate करो. So for that you must know some basic things. First thing is, अगर एक coil में if I pass current in this sense, ऐसे current अगर मैंने pass किया तो इसका खुद का magnetic field is developed, correct? और उसका खुद का magnetic field का direction outward होता है. So इसमें if I pass current in this way, it will generate magnetic field which will be pointing in outward direction. सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट. वी हैव ऑल्सो सीन द फॉर्मूला इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स. रिमेंबर, इट इज म्यू नॉट NI अपॉन 2R. कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड. और अगर इस कॉइल में करंट ऐसे पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखाते हैं. इट इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड. करेक्ट. नाउ अगर आउटसाइड है तो आई कैन से दैट दिस कॉइल बेसिकली हैज 2 फेसेस. इस फेस में आउटसाइड है और पीछे के फेस से इफ आई सी इट विल बी इनसाइड. करेक्ट. सो दिस
will act as, basically this will act as a north pole. I can write N into it, right? This face will act as a north pole and this face will act as a south pole. I can draw S into it. So south pole और north pole ऐसे poles behave करते हैं, which we will require in some questions that we will solve on basis of Lenz law. So now if you know this basic कि अगर coil में current anti clockwise flow होता है then magnetic field lines come out, and clockwise flow होता है then magnetic field lines go in. So let us consider this is magnetic field, and in this magnetic field I will place a coil. This magnetic field is 10 Tesla. Just I'll take one value, and in this a coil is placed जिसका area है 2 meter square. So can you tell me what is flux right now? The flux in this coil is B A cos theta, since angle made by the coil with the field is 0. Coil का vector, area vector and magnetic field both are inside. So basically the answer will be 20 Weber. Now Lenz law use करके direction of flux निकालना है, right? Direction of current निकालना है, right? So what I will do is I will change the flux. Flux change करने के अलग अलग methods है. So first what I will do is I'll simply pull this coil outside and I will take the coil out of this magnetic field. So what will be flux now? So final flux will be 0. जैसे field के बाहर निकाल दिया उसको. So no flux will pass. So यहाँ पे I have changed the flux. And according to the first law, whenever there is change in flux, the EMF is going to induce, matlab current is going to flow in this coil. Now if current is going to flow in this coil, tell me whether it will flow clockwise or anti-clockwise. According to Lenz law, देखो how the current का direction you can give. Tell me, initially flux कौन से direction में था? Initially flux inside था, ऐसे cross inside line थे, और finally flux 0 हो गया. मतलब अंदर जाने वाले lines कम हो गए, decrease होके 0 हो गए. So the coil will not allow that. The current will be such that inside जो lines थे उसमें change हुआ है, it will oppose that change. मतलब the current will flow in such a way that it will try to maintain the lines inside. It will try to maintain inward lines. So current will flow in clockwise direction, so that inward line it will try to maintain. Because inward line थे ना पहले, inward flux था, बाद में 0 हो गया. So current will flow such that it will try to maintain that inward lines. और एक example I will take to help you to understand the concept of Lenz law. See, one more example we will consider over here. Another example is, if this is a wire carrying current I, okay, and now this wire is carrying current I, constant current है, so magnetic field ऐसे अंदर और यहाँ से बाहर. So यहाँ से अंदर है magnetic field, cross, और यहाँ पे magnetic field अंदर जाके फिर it will come out, dot. So magnetic field is coming out, lines are coming out, again going in, coming out, going in, right? इसमें अगर मैंने coil रख दी, tell me इसमें whether any current will flow, whether any electromagnetic induction observe होगा यहाँ पे? Answer is no, because constant current है, so constant field है, B constant है, area constant है, angle constant है, so no change in flux constant है, right? इसमें flux calculate कर सकते हैं, B A cos theta. ओके यहाँ पे फील्ड चेंज मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है हर एक पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे जितने लाइंस अंदर जा रहे हैं उतने लाइंस कांस्टेंट है, फ्लक्स इज कांस्टेंट. नाउ सडनली इफ आई इंक्रीज करंट इंक्रीज कर दिया, इफ आई इंक्रीज करंट व्हाट विल हैपन? इफ आई इंक्रीज करंट, अंदर जाने वाले लाइंस विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर, सो मोर लाइंस विल गो इन, and as more lines will go in, flux is going to change, initial flux or final flux change हो जाएगा, flux is going to change, and as flux is going to change, EMF or current will induce, and according to Lenz law, the current will flow in such a way that it will oppose the change in flux. मतलब oppose मतलब क्या? Initially flux 4 ही lines अंदर जा रहे थे, now more lines are going in, as more lines are going in, the current will flow in such a way that इनवर्ड लाइन इंक्रीज हो रहा है, इट विल अपोज दैट इनवर्ड लाइन, इट विल ट्राई टू पुश द लाइन आउटसाइड, मतलब करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इट विल ट्राई टू पुश दोज लाइन्स, इट विल ट्राई टू रिमूव दोज एक्स्ट्रा लाइन्स दैट आर कमिंग इन. सो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट इज गोइंग टू फ्लो. So these are the questions which are based on Lenz law which you can solve. There is one more question based on Lenz law, standard question होता है वो होता है magnet brought close to the coil. If I bring a magnet close to the coil, what exactly will happen? See, third type of question in Lenz law will be this type. This is a magnet, north pole and south pole, and it is placed at a very large distance from this coil.
and now suddenly if I drop this magnet, as the magnet will start falling down, ये जैसे नीचे आएगा, what will happen, इसमें से जो magnetic lines are going in, they will increase. Initially no line was going in, correct? No line was going in, all lines were in this way, no line was going in. As you drop this magnet, as the magnet will start approaching the coil, coil को जैसे approach करेगा वो, automatically lines will start increasing. So इस coil में initial flux was 0, final flux increase हो गया. So change in flux हुआ, so current is going to flow. Current कौन से sense में flow होगा? Current will flow in that sense that it will try to oppose the change in flux. एक भी लाइन अंदर नहीं जा रहा था स्टार्टिंग में, मोर लाइन्स आर गोइंग इन, सो करंट विल ट्राई टू अपोज इट. इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, इट विल ट्राई टू पुश दैट लाइन्स आउटसाइड, मीन्स इसमें करंट इस सेंस में फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम द टॉप. सो एंटी क्लॉकवाइज सेंस विल जनरेट अपवर्ड फील्ड, सो इट विल ट्राई टू अपोज दैट मैग्नेट. One more approach to this particular problem is this upper face will act as a north pole. I can say upper face will act as a north pole, correct? Top view से अगर देखा तो this face will act as north pole, because north, if it is coming down, this acts as north pole, it will try to push this north pole, north will repel. So Lenz law states that the current का direction, induced current का direction is such that it always opposes the change in flux. So this is how Lenz law के ऊपर questions can be solved. Okay, so we will summarize all three laws. First two, Faraday's laws and Lenz law. If we combine all three laws, then the equation of EMF induced in a coil, EMF induced is given as minus d phi by dt. The minus negative sign indicates the direction of EMF is always opposite to the change in flux. Now in this formula you can see that volt is also equal to, unit wise it is equal to Weber per second, correct? So Weber per second is equal to volt होता है, which will help you to find the dimensions of Weber as well. Okay, so moving to this particular point, there are some questions, standard questions इस पे आ सकते हैं. First question is, if there is a rod of length L moving perpendicular to magnetic field is going perpendicular inside the plane, और उसमें ऐसे rod is moving perpendicular, मतलब rod, उसका वेलोसिटी ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ओके, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रॉड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इफ ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इफ दिस इज मूविंग, द रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, देन EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड. EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड. नाउ EMF इज इंड्यूस्ड मतलब इस रॉड पे एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो होगा. नो करंट विल फ्लो बिकॉज ओनली EMF इज इंड्यूस्ड. कॉइल पूरा, द लूप इज नॉट कंप्लीटेड टू फ्लो सो दैट करंट कुड फ्लो. ओनली EMF इज इंड्यूस्ड. और विच पार्ट इज पॉजिटिव एंड विच पार्ट इज नेगेटिव, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो व्हाट वी कैन जस्ट अज्यूम इज, ये रॉड में सब चार्जेस है, राइट? ऑल चार्जेस आर प्रेजेंट, पॉजिटिव नेगेटिव. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, electrons are present, free electrons which can move. Now if a charge is moving in magnetic field, then how much force acts on it? See, this is not in the textbook, this is not what is expected in CET, but just you must know कि कौन से direction में EMF induce होता है. So I am explaining this. If charge is moving in magnetic field, उस पर force act होता है Q into V cross B. So first I will do V cross B. V इस direction में है, B inward direction में है, so V cross B की वजह से charge will move up, लेकिन वो positive charge will move up. So इस पे positive charge will move up, negative charge will move down. So ऐसे positive ऊपर gather हो जाएंगे, negative नीचे gather हो जाएंगे. Reality में all electrons will come down, so obviously positive charge will be induced on the top. So ऐसे EMF induce होता है इतना. Now इसको अगर करंट में कन्वर्ट करना है, then what I can do is I can connect this thing to a resistor R, और इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा. दैट करंट देन यू कैन कैलकुलेट एज यूजिंग ओहम्स लॉ, E/R BLV/R. इन दिस वे आई कैन फाइंड द करंट. बट जब तक ये एक्सटर्नल सर्किट नहीं बनाया है, ओनली रॉड इज मूविंग, यू कैन फाइंड EMF इन दिस वे. अब ये EMF मूविंग रॉड में EMF कितना इंड्यूस होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि रॉड है, लेंथ है, वेलोसिटी है, फील्ड है, फाइंड EMF, ऐसे नहीं. क्वेश्चंस आर नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब क्या, कि ये जो फील्ड है वो अर्थ का फील्ड रहेगा. फॉर एग्जांपल अर्थ का जो वर्टिकल फील्ड है,
वर्टिकल फील्ड है मतलब ग्राउंड में वर्टिकली लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग डाउन, वी कॉल इट एज अर्थ्स वर्टिकल फील्ड. ओके, ऊपर से नीचे लाइंस आते हैं अर्थ की, और ये हर एक प्लेस पे होता है एक्सेप्ट पोल्स. पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है. सॉरी, इक्वेटर, इक्वेटर पे देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेकिन रिमेनिंग प्लेसेस पे यू विल फाइंड अर्थ की वर्टिकल फील्ड भी होती है, हॉरिजॉन्टल फील्ड भी होती है. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल फील्ड. अगर वर्टिकल फील्ड में इफ अ ट्रेन इज मूविंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रेन एंड ट्रेन के ये व्हील्स है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो व्हील्स जो होते हैं, व्हील्स उनका जो एक्सेल होता है, वो एक्सेल एक रॉड होता है, एंड दैट रॉड इज मूविंग इन द वर्टिकल फील्ड. सो वर्टिकल फील्ड में this axle of a train is moving. So question में ऐसे it will be given that vertical field का value will be given, axle का length will be given, sometimes axle का length is also not given. ऐसे लिखा होता है मीटर गेज ट्रेन. A meter gauge train means what? उसका एक्सेल, दो व्हील्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता है. सो लेंथ भी इनडायरेक्टली दे दी, magnetic field is also given, and it is moving with this particular speed 18 किलोमीटर पर आवर. सो वेलोसिटी भी दे दी, एंड क्वेश्चन विल बी दो व्हील्स के बीच में हाउ मच EMF इज इंड्यूस्ड. रिमेंबर, EMF इज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला तो ये है, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा फील्ड, कौन सा लेंथ और कौन सा वेलोसिटी दिया है. ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रेन नहीं, प्लेन के बारे में भी सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड. नाउ दिस इज विंग्स ऑफ प्लेन, राइट? व्हेन द प्लेन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस ऐसे in sky, it is obviously cutting vertical lines cut करके जा रहा है वो. So vertical lines, I will take BV as vertical lines, magnetic field, length, plane का जो span होता है, ये wings है planes के, right? ये plane ऐसे ऐसे उड़ता है ना. So this is the length of that wing and V is the velocity. From this you can find कि wing के across कितना EMF develop होता है. So these are application based questions. So only knowing concept, just लर्निंग, ये रट के फॉर्मूला रट के नथिंग विल हैपन. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा फील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, एल एंड वी. ओके, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसको ये कट करते जाता है. ये रॉड, दिस रॉड विल कट दिस लाइंस विथ वेलोसिटी वी एंड लेंथ z. करेक्ट? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन लेंज लॉ, ऑन फैराडेज लॉज. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस. यहाँ पे see, magnetic field is going in and there is a rod inside, but this rod is not moving. This rod is basically rotating at the same place. It is rotating. Okay, yet this was moving, complete rod is moving, means each and every particle on this rod is moving with velocity v. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है. यहाँ पे एक पॉइंट रेस्ट पे है, दूसरा पॉइंट, और पूरा रॉड ऐसे मूव कर रहा है. सो ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, इट इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, राइट? और एंड पॉइंट का वेलोसिटी v है. सो ऐसे केस में अगर इस रॉड में एवरी पार्टिकल इज मूविंग विथ वी 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 वी, सो एवरेज वेलोसिटी v है. यहाँ पे दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग, इसका वेलोसिटी ऊपर पॉइंट का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दिस पॉइंट का वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ये तो सेंटर है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, v दिया है उसका वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी. सो इसका एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? v प्लस 0/2, दैट इज v/2. सो फॉर्मूला क्या आएगा? BL v/2. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन अ रॉड इज रोटेटिंग एट द सेम प्लेस. रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है अगर, in that case you will not use BLV, you will use half BLV. And sometimes velocity of tip is not given, omega is given, कि at what omega it is increasing. So tip velocity v equal to r omega, so v equal to l omega replace किया तो l square omega हो जाएगा. So this becomes the formula. Even in this case, remember, even in this case when it is rotating, correct, सेंटर और एंड के बीच में EMF इंड्यूस हुआ है, सेंटर और एंड के बीच में, लेकिन नो करंट इज गोइंग टू फ्लो. व्हाई नो करंट इज गोइंग टू फ्लो? बिकॉज सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट ऐसे बना ही नहीं विद, सो नो करंट विल फ्लो, ओनली EMF इज इंड्यूस. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड में. देखो, एप्लीकेशन बेस्ड में क्वेश्चंस विल बी इन दिस वे कि देयर इज अ रॉड, इट इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, rotating in magnetic field ऐसे, what is EMF induced? But question won't be this simple. Question will be in this way कि there is a wheel with 10 spokes, 20 spokes, and this wheel is rotating in magnetic field, horizontal magnetic field में rotate कर रहा है. Then what is EMF induced across each spoke? Each spoke के across this much EMF will be induced. And remember, all these spokes के across same EMF will be induced. मतलब
फर्स्ट स्पोक के अक्रॉस अगर 10 मिली वोल्ट इंड्यूस होता है तो इसके अक्रॉस भी 10, इसके अक्रॉस भी 10, एवरी वन के अक्रॉस 10, एंड पैरेलल में है ये दिस एंड दिस थिंग, बेसिकली ये पैरेलल में, इट इज़ एज गुड एज अगर ये रॉड ये 10 स्पोक्स को मैंने अगर ऐसे पैरेलल में लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और सबके ये जो पॉइंट्स है ना, डाउन पॉइंट्स, इनको अगर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ये पैरेलल कनेक्ट किया, राइट, ऑल आई हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल, और ये सबको अगर श्रिंक कर दिया एंड देन इनको इफ आई मेक इट इन सर्कल यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप, राइट. सो ऑल दीज बेसिकली ऑल दीज स्पोक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल में नेट EMF पैरेलल में ऐड नहीं होता है, पैरेलल में सेम रहता है. सो ये होता है एक्सल और ये होता है रिम और एक्सल के बीच में हाउ मच EMF इज इंड्यूस्ड, आंसर इज स्टिल 10. सो एक रॉड या अनेक रॉड, हर एक केस में EMF इंड्यूस्ड विल ऑलवेज बी सेम, E is equals to half BL square omega. So these are the questions that you can expect d5 by dt. Straight forward questions नहीं आएंगे CET में, थोड़े application based questions you can expect. Okay? Okay, so the next theoretical point is eddy currents. Now what is basically eddy currents? Whenever a metal block, see the definition is given over here. Eddy current is an induced current produced in the metal blocks when they are subjected to changing magnetic field. Now if this is a metal block, and if this block, if I place it in the magnetic field north and south pole, magnetic lines are from north to south, if I start changing this magnetic field, we have seen that if I start changing this magnetic field, we have seen that if changing magnetic field is given to the coil, the current starts flowing through that coil. If this is a coil and if I start changing the magnetic field passing through it, induced current will be produced. Similarly metal block में भी induced current flow होगा, लेकिन वायर में since metal में से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन will travel through this long path. But metal blocks में ऐसे कुछ नहीं है, metal blocks में electrons are free to move everywhere. So electrons start revolving in the small radius वाले circles depending upon their velocities. Smaller velocity वाले electron will revolve in a smaller circle, the faster electrons will move with a larger circle. So these basically constitute eddies or whirlpools of electron, which is called as eddy current. This current is called as eddy current. Now eddy current के कुछ applications है that you must know. Before that, eddy current was discovered by this scientist Foucault, so it is also called as Foucault's current, and these are applications which are already given in the textbook: deadbeat galvanometer, induction furnace, speedometer and electric brakes. Now obviously the theory paper is already over, it is not expected कि you should write in detail, only you have to tick the option, right? So ऐसे question आ सकता है, which of the following is not the application of eddy current, and in that out of the 4 option 3 option इसमें से रहेंगे, एक option अलग रहेगा. You must understand, you must know what is eddy current and also the applications. Okay, so now we will move to the next point. Okay, so next 2 important points in electromagnetic induction is self-induction and the mutual induction. Now see, we have already seen what is meaning of electromagnetic induction, right? It is the reverse effect of magnetic effect, and usme we give magnetic field, we get current. So if a coil is placed in magnetic field and if I change the flux passing through the coil, the current is going to induce, correct? But what is the meaning of self-induction now? Let us consider, first of all, I will take example of a solenoid. Now everyone knows what is a solenoid, and solenoid में से I will pass certain current. Now when you pass current through this solenoid, इस solenoid में magnetic field is developed, and we have seen this magnetic field का strength in magnetic effect of electric current. This shape का field is developed, right? Correct? ऐसे field develop होता है, loop में होता है वो actually. I will just show the field inside the coil. So do you remember what is magnetic field on the axis? The formula was mu naught Ni. Mu naught Ni was the formula of magnetic field on the axis. And as we know that, if I ask you कि ये जो solenoid है उसमें से how much flux is passing, then flux you can give me the answer as magnetic field. ये external magnetic field नहीं है, खुद के current का ही magnetic field है, into area into cos theta as angle between area vector and magnetic field is 0. cos 0 लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. So what will be magnetic flux passing through this coil? Magnetic flux passing through this coil will be mu naught Nia, and clearly I can say that magnetic flux is directly proportional to the current in this coil. Means if I am passing some current, let us say 1 ampere, I will get certain flux. अगर मैंने 2 एम्पियर कर दिया, फ्लक्स विल डबल, 3 एम्पियर कर दिया, फ्लक्स विल ट्रिपल.
करेक्ट, इस कॉइल का फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज बिकॉज आई एम चेंजिंग द करंट इन द सेम कॉइल. एंड इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच आई विल राइट ओवर हियर, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. देखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये करंट साइड को निकाल दिया अगर, इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ एंड एरिया. मतलब इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस दैट इज एरिया एंड लेंथ, एरिया एंड लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली. सो दिस कांस्टेंट is called as coefficient of self inductance और coefficient of self induction. and उसका यूनिट क्या आएगा? टेल मी, यूनिट क्या आएगा? L का, L का यूनिट आएगा, L का यूनिट विल बी वेबर पर सेकेंड. क्लियर? वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर विल बी द यूनिट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन. वेदर दिस इज क्लियर? सेल्फ इंडक्शन में इफ देर इज अ कॉइल एंड इफ आई पास करंट थ्रू इट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड. डोंट वरी अबाउट दिस लेसन. इस लेसन के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स. इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स वी हैव सीन सोलेनॉइड में से इफ आई पास करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डेवलप्ड. हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल? दिस मच. सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेम कॉइल. उसी कॉइल के करंट पे उसका फ्लक्स डिपेंडेंट है. एंड इसका जो कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इसका यूनिट वी हैव सीन. नाउ टिल नाउ वी हैव नेवर चेंज द करंट. द करंट यूज्ड टू बी कांस्टेंट, फील्ड यूज्ड टू बी कांस्टेंट. लेकिन अगर सोलेनॉइड में, अगर ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में इफ आई एम पासिंग सर्टेन करंट, ऑब्वियसली फील्ड इज डेवलप्ड एंड एवरीवन नोज फील्ड का फॉर्मूला. सो वी नो दैट इसमें फ्लक्स कितना है? फ्लक्स इज Li. नाउ वी नो दैट इट इज Li, करेक्ट. But now if I start changing this current, the flux will start changing. Either it will increase or it will decrease. Depending, if I am increasing current, so flux will increase. If I am decreasing current, flux will decrease. So because of changing current, यहाँ पे EMF will be developed according to E.M.I. Now we are entering again back to E.M.I. topic. Electromagnetic induction का क्या statement है? Whenever coil का flux changes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में व्हेनेवर कॉइल में से फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. सिमिलरली इफ आई विल चेंज द करंट इन द सेम कॉइल, इसी कॉइल में फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज एंड दैट फ्लक्स, चेंज इन दैट फ्लक्स विल रिजल्ट induced EMF in this coil. And therefore if I use the formula E equals to minus d phi by dt, tell me how much EMF will be induced? Induced EMF will be minus phi का वैल्यू अगर डाल दिया, L is constant, di by dt. What is the meaning of this negative sign? The negative sign indicates it will oppose the change in flux. Means if I am increasing current, it will try to oppose the increase in current. It will try to oppose the change in flux. This is the formula, and in magnitude form we write it in this way: E is equal to L di by dt. So L का unit we already know, it is वेबर पर एम्पियर. ओके, L का यूनिट ऑफ L क्या है? L का यूनिट है वेबर पर एम्पियर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट विल बी द अदर यूनिट? इट विल बी वोल्ट, ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड अपॉन di मतलब करंट, एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. as well as volt per ampere can be called as ohm. So ohm second will be the third unit. First unit is Weber per ampere, second unit is volt second per ampere, third unit is ohm second, and the famous unit is Henry, which we will normally use. Unit of self inductance is Henry, H, capital H is the notation, right? So this is the explanation of self inductance. We need this formula for further derivations. You must remember this formula. Everything, all thing is not given in the textbook. Directly this relation is given in the book. Okay, so don't worry about this part. Main part here hai this formula and this formula, as well as units, dimensions of self inductance L. Okay, so the next part is mutual inductance. We have seen self induction, now the mutual induction. What is meaning of self induction? We have seen self induction means change in current in the main primary coil causes EMF induction in the same coil. Now see, if you consider this particular figure, इसमें से if when I switch this circuit on, इसमें से current is going to flow, and as current will flow, this will create magnetic field in this coil.
करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लूप्स में होती है, राइट. इट विल, सम ऑफ द फील्ड विल ऑल्सो लिंक विद दिस कॉइल, इस कॉइल में भी थोड़ी लिंक हो जाएंगे. सो इस कॉइल में जो करंट है that will create magnetic flux in this coil, as well as some of the flux will also link in the secondary coil. We will call this coil as secondary coil, this coil as primary coil. So primary coil का current primary coil में flux generate करता ही है, but it, some of the flux will also link with the secondary coil. So I can say that flux linked with primary coil is proportional to current, no doubt. Flux linked with the primary coil is proportional to current, but flux linked with secondary coil is also proportional to current. In which coil? In primary coil. Primary coil का current primary coil में flux generate करता है, as well as secondary coil में भी थोड़ा बहुत flux link हो जाएगा if any secondary coil is placed close to it, उसके पास रखा है तो. इसका constant क्या है? primary coil का जो flux है, इसमें जो फ्लक्स है उसका कांस्टेंट इज L, वी हैव सीन इन द प्रीवियस डेरिवेशन, एंड द कांस्टेंट फॉर सेकेंडरी कॉइल इज M. M इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस. Okay, its unit, dimension, everything will be same. Can you tell me what was the unit of L? Unit of L 4 यूनिट थे, Weber per ampere, also equal to volt second per ampere, also equal to ohm second. The most famous one was Henry. Similarly, इसका भी unit remains same. And if I take derivative, then derivative क्या आएगा? Derivative of secondary flux will be EMF is equal to minus d phi by dt is equal to minus m dip by dt. This is how you can derive, this is how you can get the, how much, get the value of EMF, how much EMF is developed in the secondary coil using the formula. अगर magnitude पूछा है then m di by dt will be the answer of mutual inductance. So इस coil में current change हुआ, इस coil में EMF develop हुआ, but at the same time यहाँ पे भी EMF develop होने वाला है. But right now since we are discussing about mutual inductance, we will only focus on secondary coil. See, if this current is constant, remember, if this current is constant, this flux will be constant, this flux will be constant, everything is constant, so this galvanometer will show no deflection, correct? No current is going to induce. But as soon as you start changing this current, this flux will change, this flux will change, as this flux will change, the current will flow in this circuit. This is how self-induction and mutual induction can be explained. Remember, these two topics are important for MCQs. Mostly questions will be asked on these formulae. Okay, we will move to the last point of this particular video, that is transformer, which is based on the concept of mutual induction. Okay, so last part of this video is transformer, and the next part of this lesson E.M.I, that is alternating currents, generation of AC, और उसके बाद का part AC, that we will cover in the second part of this particular lesson, second part of this video. Okay, so transformer में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. मतलब एक कॉइल में इफ आई चेंज फ्लक्स, ऑटोमेटिकली सेकंड कॉइल में EMF इज गोइंग टू इंड्यूस. नाउ सी, देयर इज अ iron core over here, soft iron core, which is laminated. Okay, it is a laminated iron core. Why laminated? Because if it is not laminated मतलब क्या, first of all iron core, ये जो core है वो thick होता है. It is a metal block basically, एक metal block होता है, और metal block के ऊपर यहाँ से वायर और वहाँ से वायर बाउंड है. इसमें से if I change the current, automatically flux will change in this iron core, and अगर block में flux change होता है तो वहाँ पे eddy currents बन सकते हैं. So to avoid those eddy currents, what is done? वो जो आयन कोर है उसको स्मॉल शीट्स में कट किया जाता है और बीच में इंसुलेटर्स डाले जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज लैमिनेटेड आयन कोर. लैमिनेटेड आयन कोर विल अपोज द, इट विल अवॉइड द एडी करंट्स फॉर्मेशन. एडी करंट फॉर्म नहीं हो सकता उसमें, इसलिए लैमिनेटेड आयन कोर है. यहाँ पे व्हेन प्राइमरी कॉइल पे इफ आई अप्लाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल कॉज चेंज इन फ्लक्स, एंड देयरफॉर यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी यहाँ पे भी. Okay, so exactly what is done is primary पे we give input supply. This is basically symbol of transformer. This is electrical symbol. जैसे resistor का होता है, this is symbol of resistor, this is symbol of capacitor, this is symbol of diode. Similarly, this is symbol of a transformer. Okay, so this primary पे on primary coil, if I connect alternating source, this is called as V1, or in this case we will call it as E, because instead of voltage I will use EMF. EMF connected to primary,
and as this is alternating, this is not a DC supply, okay, DC नहीं है, alternating supply है, मतलब its value is going to fluctuate as well as direction is going to change. Therefore यहाँ पे induced EMF जो है, induced EMF that will also be fluctuating. So यहाँ पे secondary जो है it will also be fluctuating. And in the textbook we have seen the derivation. What is the main equation that we get? The equation that we get is ES by EP, that is secondary में कितना EMF generate होने वाला है divided by primary का EMF is equal to number of turns in secondary upon number of turns in primary. This is very very important. This particular ratio is called as turn ratio. Okay, I will solve simple example so ये clear हो जाएगा. ट्रांसफार्मर का यूज़ देखो. सपोज ये ट्रांसफार्मर है, ओके, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 100 टर्न्स है और सेकेंडरी पे 200 टर्न्स है. जस्ट बाय नोइंग दिस 100 टर्न्स 200 टर्न्स, सिंपली इसका मीनिंग ये होता है कि अगर टर्न्स डबल है ना तो ये ईएमएफ भी डबल कर देगा, बिकॉज ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू टर्न. मीन्स अगर यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के 20 वोल्ट का सप्लाई लगाया, देन व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट? आई विल गेट 40 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग सप्लाई. सिंपल. नाउ यू विल थिंक कि एनर्जी जनरेट हो गया है यहाँ पे. नो, एनर्जी इज नॉट जनरेटेड. यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं हुआ है. ट्रांसफार्मर विल नॉट हेल्प टू जनरेट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. बेसिकली ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज इंक्रीज होता है, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन करंट. करंट डिक्रीज हो जाता है, दैट वी विल सी लेटर ऑन. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, टर्न रेशियो का मीनिंग क्या है? अगर टर्न डबल होता है तो ईएमएफ ऑल्सो गेट्स डबल. इफ आई से इसको सिर्फ 50 टर्न्स है, सो इन दैट केस ईएमएफ वुड ड्रॉप टू हाफ, 10 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज टर्न हाफ है. सो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बेसिकली हेल्प यू टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड कितना ईएमएफ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. नाउ सी, in this we use particular terms such as step up transformer, step up transformer and step down transformer. Step down transformer and step up transformer में क्या difference होगा? Step up transformer में transformer which increases the voltage, voltage increase करने वाला transformer, मतलब यहाँ पे NS क्या होता है? greater होता है NP से. एंड स्टेप डाउन में वोल्टेज कम करने वाला है, सो सेकेंडरी के टर्न्स लेस देन प्राइमरी के टर्न्स होते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल मेक मिस्टेक इन दिस. सी, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन इन दिस वे, यहाँ पे देर आर 10 टर्न्स, ओके, और आई विल जस्ट मेक टर्न्स डबल, 20 टर्न्स. यहाँ पे अगर मैंने सप्लाई दे दिया 50 वोल्ट का, देन व्हाट विल हैपन टू द आउटपुट? नॉर्मली एवरी स्टूडेंट विल गिव मी द आंसर कि 100 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज टर्न्स डबल कर दिया तो वोल्टेज डबल. बट नो, आंसर इज 0 वोल्ट. वाई 0? बिकॉज देखो यहाँ पे विच टाइप ऑफ बैटरी आई हैव कनेक्टेड? आई हैव कनेक्टेड अ कॉन्स्टेंट सोर्स, डीसी डायरेक्ट करंट अप्लाई किया है. एंड डायरेक्ट करंट अगर अप्लाई किया तो देर इज नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन करंट, सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो नो आउटपुट वोल्टेज विल गेट. यहाँ पे स्ट्रिक्टली विच टाइप ऑफ वोल्टेज वी वांट ऑल्टरनेटिंग सोर्स. अगर ये ऑल्टरनेटिंग ऐसे सिंबल होता था, then answer would be 100 because turns double, voltage double. Clear है? So transformer can only work for AC, it cannot work for DC. You cannot just magnify the voltage in DC. AC में कर सकते हैं. Now see, इसमें और equations है that you must know. When transformer is used, input में जो voltage देते हैं अपन, that is called as EP. Output में what voltage we get, it is called as ES. During the process, already I have made this clear, we never generate any form of energy. Means input का जो power है, input power is always equal to output power. ये कब होता है? अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो. If transformer is ideal transformer, which is normally in most of the questions, input power will be output power. And power का formula 10th में देखा था, I2RT वॉज हीट लॉस, राइट? I2RT, हीट को डिवाइड बाई टाइम कर दिया, हीट अपॉन टाइम इज पावर, वर्क अपॉन टाइम इज पावर. सो I2R और VI, दूसरा फॉर्मूला उसका VI था, वोल्टेज इंटू करंट. सो यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट पावर. EP/IP इज इक्वल टू ES/IS. देयरफॉर ES बाय EP क्या आ जाएगा? ES/EP विल बी IP/IS इज इक्वल टू, यहाँ पे तो NS/NP है, NS/NP, NS/NP, ES/EP, बट करंट में इट इज एग्जैक्टली रिवर्स. करंट में उल्टा होता है. मीन्स व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन करंट. इसके ऊपर आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन. सी, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज ट्रांसफॉर्मर 40 टर्न्स, और यहाँ पे टर्न्स आई विल जस्ट मेक इट ट्रिपल.
आई विल मेक इट 120 टर्न्स. क्लियर है? सो अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है 10 वोल्ट, हाउ मच वोल्टेज डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट अ वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट ऑब्वियसली, बिकॉज करंट नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है, सो इवन वोल्टेज शुड बिकम 3 टाइम्स. लेट अस से इफ आई कंसिडर कि इसमें करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे करंट 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा, अब 1/3 हो जाएगा. करंट यहाँ पे कितना होगा? करंट विल बी ओनली 1 एम्पियर. और एल्स यू कैन जस्ट रिमेंबर इट इन दिस वे, वोल्टेज इंटू करंट कांस्टेंट रहना चाहिए. वोल्टेज इंटू करंट इज कांस्टेंट, सो यहाँ पे कितना वोल्टेज इंटू करंट है? वोल्टेज इंटू करंट इज 30, सो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, सो दिस शुड बी 1. Clearly, this formula will be helpful to solve these type of question जहाँ पे current will be asked. Now see, mostly question में if ideal transformer is not mentioned, उसका efficiency is given. Now I'll explain that type of question as well. If efficiency is given, if the question is in this way, see, 10 turns, I'll make the question easy. Just I want to explain the concept. 20 turns. Alternating source 10 volt. You can easily tell me output voltage कितना है. Okay, input current is 2 ampere, output current will be what? If efficiency is 70%, ऐसे दिया है 70% efficient है ट्रांसफॉर्मर. Okay, how to solve this type of question? Efficiency mention होता है. To solve this type of question, first we will use this formula because this formula is irrespective of efficiency. वो formula efficiency पे depend नहीं करता है. Any type of transformer, this formula will hold true. मतलब वो formula क्या है? ES output EMF upon input EMF is equal to output बाहर के number of turns NS upon input के number of turns. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 20 upon 10 is equal to what is EP? 10 upon what is output का voltage. Solving this you will get कि यहाँ पे 20 volt होना चाहिए. Correct? This should be 20 volt. 10 volt तो 20 volt as number of turns doubled. Now what should happen to the current? We don't know. Let us say current is X. We don't know what will happen to current. So current calculate करने के लिए now we use the concept of efficiency, and according to the definition of efficiency, see, definition of efficiency क्या है? Efficiency is defined as output power upon input power into 100. This is percentage efficiency into 100. कितना परसेंट एफिशिएंट है अभी? इफ इट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट इज 100% एफिशिएंट. 100, सो 100 कैंसिल होता है, आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर मिलता है. इन दिस एग्जांपल एफिशिएंसी इज ओनली 70%, सो 70 इज इक्वल टू आउटपुट पावर इज करंट, आउटपुट करंट इंटू वोल्टेज 20 अपॉन इनपुट पावर इज 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 इंटू 100 है यहाँ पे, सो 100 विल गो डाउन. करेक्ट? 100 will go down. Now how will you solve this? 20 will cancel. X will be how much? X will be basically 0.7 ampere. So this current will only be 0.7 ampere. This is how you will solve questions based on efficiency. If the transformer is not ideal, it is not 100% efficient. अगर efficiency mentioned है, we need to solve the questions in this way. So whether transformer part is clear, what is प्राइमरी सेकेंडरी, हाउ द फॉर्मूला, टर्न रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट इट, स्टेप अप स्टेप डाउन मतलब क्या, एफिशिएंसी मतलब क्या, करंट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इस फॉर्मूले में, इनवर्स प्रोपोर्शन है देखो करंट को. सो व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस इट इज ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन करंट, करंट कम हो जाता है उसमें. So this is all about transformer and the first part of electromagnetic induction. In the second video we will start with alternating current AC में how to connect it across a resistor, inductor and capacitor, and finally तीनों को साथ में LCR circuit, एक बार series में and then parallel combination. Okay, so this is all about the first lecture.